For me, मेरी 2 बजे की शिफ्ट है अभी. So that's. और गाना शूट करना है. हाँ, गाना शूट करना है. हाँ, और लिरिक्स याद करने हैं. तो काफी बैटल्स है. बैटल्स ऑलरेडी चालू है. और मेरे लिए है कि एक लड़ाई को जीतने के लिए उसे बार बार लड़ना पड़ता है. एक पिक्चर को हिट बनाने के लिए उसे बार बार बनाना पड़ता है. एक पिक्चर को प्रमोट करने के लिए बार बार इंटरव्यू देना पड़ता है. हर चीज़ करना पड़ता है. सो बैटल इज ऑन एवरी डे ऑफ आवर लाइफ्स. लंच टाइम पे भी बैटल है. खाना खा लो जल्दी से. घर में से फोन आया, रात को खाने में क्या बनाऊं, वो भी बैटल है. सो इट्स अ बैटल एवरीवेयर, यू नो. Hi Sanjana. सॉरी, हम लोग के लिए तो हर फ्राइडे बैटल है यार. वी गॉट टू रिलीज एवरी फ्राइडे, सो वी आर बैटलिंग. मैम आपके लिए आप भी जवाब दीजिए. फॉर यू. मेरा कोई बैटल ही नहीं है. ये देखो बात, इसे कहते हैं जवाब. वेलकम 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 एंड कंग्रेचुलेशंस पहले से ही. अब मैं वो पूछूंगा कि डायरेक्टर साहब को इसका कितना क्रेडिट जाता है और कितना. हाउ डिड यू लाइक इट? I'm still in a little bit of shock because this is the first time I'm actually seeing it. तो मैं अभी recover हो रहा हूँ. But how did you all like it? That's more important. Yeah? The response is जबरदस्त already, you know. तो एक काम करते, बहुत सारे और सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिलहाल the leading lady, ladies and gentlemen, the very gorgeous, the very talented Sanjana Sanghi, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां. Come on, make some. वो CTs किधर गया? CT कहाँ गई? All the CTs and talis. Okay, can we have some more light? थोड़ा सा. Yeah. इतना सारा लाइट यहाँ सब चमक रहे हैं क्या आप मानिया? संजना, this one's for you. जल्दी से a quick question. How did you like the trailer? देखो यहाँ तो response मिल गया हमको, है ना? यहाँ कैसा लगा? I'm too overwhelmed, man. I really don't have the words, and I usually have a lot to say. Right. But this is just, I was joking. But this is like, I can't believe it. I'm right now just trying to get over what I saw of Adi. I can't even look at anything else. So secret बता दो. Were you looking at yourself या सिर्फ आदि यहाँ पे screen? I was in the film also looking at him. Now also I was looking at him only. Whoa. Can't blame her now. And now, ladies and gentlemen, someone who's been a DOP, जिन्होंने अपने कैमरे की ताकत से, you know, हमको बहुत सारी चीजें बहुत amazing ढंग से दिखाई है. And now debut कर रहे हैं as a director, and with this तोड़-फोड़ film, give it up for Kapil Verma साहब, ladies and gentlemen. ये मचा असली हल्ला. कपिल सर, congratulations. खुद मन नहीं करा कि मैं भी आ जाऊं इसमें सर, एकदम मतलब कि एक सीन में मैं भी आऊंगा आदित्य के साथ. सर इसके सामने पॉसिबल ही नहीं है. जैसे मैंने कहा, strongest soldier, ladies and gentlemen. And now to invite on stage the producers. And हम सब ने सुना है, all heroes do not wear capes, है ना? लेकिन some of the heroes, what they do is they direct and produce blockbusters, they choreograph chartbusters, and क्या है, अपनी Batmobile में they just roam around town. And he is the one and only Ahmed Khan साहब, ladies and gentlemen. Woo! सर लाए हैं नीचे. वेलकम सर एंड कंग्रेचुलेशंस. प्लीज सर आए. और भाई सुपर हीरो हैं तो उनके साथ भी कोई होना चाहिए. समवन हु रियली अंडरस्टैंड्स फिल्म्स, एंड खाली नाम के लिए शी इज नॉट अ प्रोड्यूसर. जब वो फिल्म की बात करती है, इट्स रियली पैशनेट टू सी द वे शी टॉक्स अबाउट फिल्म्स. गिव इट अप फॉर शायरा मैम, लेडीज एंड जेंटलमैन, शायरा खान. और मुझे किसी ने बताया वो बैटमोबाइल उनकी है, वो तो ऐसे ही चलाने को दी थी. मैम, congratulations on this. So good to see you. And now, ladies and gentlemen, would like to invite on stage someone जिनके लिए इतना ही कहूँगा, he's a visionary and he's been leading this team for quite some time now. जिन्होंने हमें बहुत सारी amazing films दी हुई हैं. And ladies and gentlemen, Z Studios से give it up for Sharik Patel साहब, ladies and gentlemen. Welcome sir and congratulations on yet another blockbuster. सर पहले से ही बोल दे रहा हूँ मैं. Thank you. Here you go. So I have a question अब सबके लिए. Sir, for you, सबसे पहले, why an action movie? Like when you have Aditya, when you have Sanjana, तो होता कि कुछ और भी कर सकते हैं इनके संग, और तालियां सीटी उतनी ही बजनी थी. What made you decide on an action movie as your debut movie, sir? First of all, the story. Right. In 2018, when we spoke, Ahmed sir had narrated the film. Yeah. And also, since childhood, I've been watching action films. Right. और मैंने approximately 2001 से बहुत सी एक्शन फिल्में शूट की है.
So always wanted to make an action film. Always that was one of my dreams. And yeah, Adi has done a lot of romantic songs, films, and everything. So when the story got locked, the only person we thought was कि ये बंदा कर सकता है. So that's how it began. और कमाल कर दिया है, वो दिख रहा है. मैंने जैसा कहा रिस्पॉन्स मिला है. So वापस से बधाई. Sanjana, this one's for you. Please tell us, technically speaking, this is your big screen debut, right? Yeah. है ना? So क्या चल रहा है? क्या चल रहा है दिमाग में? Because yes, of course, you've done a movie before this and we loved it. लेकिन this time बड़े पर्दे पर पहली बार संजना क्या बोलेंगी? I didn't kind of realize that that's the case till Ahmed sir actually told me 3-4 days ago when I called him saying, "Sir, I'm feeling really nervous and I don't know why." And he said because it is your first time as a leading actor. I mean, I was 13 when Rockstar came out, and I remember the frenzy at the time. But this, it just feels different and it hits differently. And Om is, it just feels like a part of me. I can't like imagine it as a film. So whatever happens, it is very personal. Right. And I just hope and pray that all the literal blood and sweat that we've put, our audiences just enjoy it as much as we that's do. Gonna happen. Aditya has got this crazy fan following, right? Like everybody loves him. So for you, मुझे किसी ने बताया है, a little birdie told me कि ऐसा sets पे भी you were like, हाँ यार, मतलब आदित्य के साथ film कर रही हूँ. Like, was it like, look at the चेहरा देखो कैसा बना रहे हो, है ना? How was it, कि ऐसा मतलब आदित्य के संग film कर रही हूँ? So were you like, दिमाग में चल रहा था? Indifferent. Like, were you was I feeling like, okay, whatever? different? Like, चल रहा था कि हाँ आदित्य के साथ हूँ मैं? I think I should say something about it. Say. Sir, such. No, it was just, see, when he's on set, everyone is like, Adi. तो वो तो होता ही था हर वक्त. Yeah, all the departments were like, even for her, I think it happened for a couple of days, and then slowly as we started finishing the progress of the film, it went. जब shirt निकाला end में, so the कहानी थोड़ी बदल गई वहाँ पे, because you all were like, आदि ने पूरी तरह शर्ट उतारा. पूरी तरह. Adi, for you, how was it? I'll tell you why. Because from Ashiki 2 to Malang and Ab, और इसके बीच में भी जितनी फिल्में की हैं, this is truly different. We usually say here कि हाँ भाई ये बड़ा हटके होने वाला है, but this is actually हटके. Yeah. So what do you have to say on this transformation and this entire journey? Yeah, for me, it definitely does feel like a new chapter for me. I've grown up watching action films, and I guess the first success that I found was in romance. So I ended up doing a lot more of it. But action is always something that I've kind of had held very close to my heart, and I've wanted to do it. Right. So I think it just required, someone to see that in me, and I'm glad that Sharik and Ahmed sir and Kapil saw the potential for me to kind of pull out an out-and-out action film, because Malang had a little bit of it, but this required a whole other level of action and dedication. So it was quite a process, and every film has its own challenges. For me, in this film, I guess the challenge was to try and learn something fresh, like learn how to. I spent quite a few months doing it. It was 3-4 months we spent doing the action to look convincing, and hopefully you guys think we pulled it off, yeah. It's more than just convincing. हम लोग डर के दूरी बना के बैठ रहे हैं आपसे. Shara ma'am, this one's for you. A little professional, personal mix कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. How many times did Ahmed sir like walk up to you and said कि यार ये वाली सोच रहा हूँ मैं ही डायरेक्ट कर लेता है. बहुत कमाल लग रही है. Like please tell us. I don't think he said. Actually, कभी-कभी mind में आया भी होगा. Because actually this is his baby also. For him, making this film, being a part as a producer and creative producer, like being the action person behind this, was more intriguing for him. And बस आपने देख लिया है कि आ गया result. अभी तो देखिए आप क्या क्या होने वाला है I जब don't थिएटर में know. आएगा. I'm sure. Hopefully, God willing. Yes, Ahmed sir, this one's for you. मुझे बताएं, every time you've been associated with an action movie, वो बार एकदम ऐसा ऊपर ही जाता है. This time, how was it when you were as a producer, और डायरेक्टर कोई और है? So उस समय क्या चल रहा था? How was it for you? अब directing an action film is a different experience, but producing it is also the same experience. उसका extension ही है. And especially when you have a talented boy like Kapil, holding the reins, so you feel ride the chariot and enjoy पीछे से.
but just थोड़ा सा guidance के लिए I was there. But whole and soul, Adi worked very hard. इन्होंने इतनी coming out from a musical lover boy image, going into action and giving it full. ये नहीं कि चल पहली थी तो छोड़ दो, दूसरी he may do better. I think he's given it all in the first film only. So जब इतना अच्छा support and then you have a friend like Sharik Patel Studios telling that go all full on. आपने देखा होगा choppers है, plane है, ship है, battleship है, VFX है, full on action blast, हर एक चीज़ है इसमें. So that was a great support from him also. तो इतनी सारी चीज़ें जब एक साथ आ जाती हैं तो मुख्तलिफ ख़यालात नहीं होते. You're working towards one destination and that made it very easy for me. And the good thing was having Sanjana come into this avatar after a sweet girl image. वो लड़की ने इतनी convincingly सब चीज़ किया है, action भी किया है. And that surprised me. And there's some God's hand. इस picture का नाम ओम है. So एक है, कुछ है, which I feel. Sir, बहुत कुछ है और देखने को मिलेगा theaters में. Sharik sir, this one's for you. Please tell us. You know, usually what we know about is that a studio comes in later, right? Producers film बनाते हैं, then they approach a studio. They say, भाई ऐसे. यहाँ पे in this case, Z Studios was there from day one. So how was this for you, and how different was it from all the other experiences? No, for us at Z Studios, Om is like our baby. It's even though the script came to us, from the writers, we pretty much from the first narration itself said that ये हमको करना है. And of course, Ahmed sir was associated with it upfront. The amount of time we spent on the scripting of this was, I think, almost a year from the time what I thought was like, yes, this is good to go. Then Ahmed has he sits with the writers and nichodas more. The poor writers, I think, pata nahi aur kitne, how many weeks and months they spent in getting it right. We were very clear that I wanted to make a franchise action film and effectively launch like a new action hero. I mean, really, this was. So we said, let's. And Adi, we've signed up for his next 20 films are with us. So Breaking news. Breaking news. So the idea is to invest in in strong talent, young blood. With Sanjana and Kapil's done a fantastic job. So it was just the ideal combination of with Ahmed's direction or his supervision and Kapil, taking care of the running of the set and and calling the shots. And both these actors and the rest of our stellar cast has done a fantastic job to give us a true action film with a new action hero, and hopefully we'll have version 2, 3, 4 of this. So Wow. Some wonderful content that we just saw on the big screen, ladies and gentlemen. आगे की franchise को कैसे आगे बढ़ाएंगे? We'll definitely talk about that. We good. Yeah. Before we take their questions, I was talking about the transformation for you. Yeah. How easy was it, or like was it taxing, or फिर अब क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे? It was, I think what made it easy was, I remember the first time when Ahmed sir called me, and out of the blue, Ahmed Khan was calling me, and for 20 minutes he kind of told me this summary of Om. And I remember saying, I was like, sounds like a great story, so what do you want me to do? I mean, and then he said that I want you to play the leading lady. And I genuinely didn't believe him, because I, for the life of me, couldn't have thought that I would ever do an action film so soon, or maybe ever at all. Because my sense of belief in myself is pretty low, so I usually don't think I can manage stuff. Right. But it was their conviction. I mean, Kapil and Ahmed sir had zero doubt. Right. He said, I've seen what I had to see and you're going to do this. And I just went with that conviction. So he's made me discover a whole new side to myself. Amazing. Sir, Parki Nazar or Sanjana, super. Now it's over to you guys. Kidhar se aa raha pehla sawal? Yes, please shoot. Hi everyone. This is Ashish from First India. Idhar, Adi. Sanjana, idhar. Hi, idhar. So first of all, congratulations for such a sleek, sexy and fully action-loaded trailer. Thank you. बहुत अच्छा लगा. आदि, आपसे पहला सवाल है कि ये एक कस्टम बनते जा रहा है कि शर्ट उतारना है. ये फीमेल फैन फॉलोइंग का प्रेशर होता है या स्टोरी की डिमांड होती है? I think ये कॉम्बिनेशन है. प्रोड्यूसर की डिमांड थी.
प्रोड्यूसर की डिमांड भी होती है. But I think if you look at it, a lot of action films, the physicality is एक requirement होती है, and especially in a film like this. तो इस फिल्म में तो बनता है, I think. और अच्छे भी लग रहे हो. कपिल, आपसे एक सवाल है संजना के लिए. इधर मैं यहीं पर हूँ. इतनी प्यारी मासूम सी दिखती हैं ये, इनको इतना डेयर डेविल एक्शन वाला अवतार देने के लिए कैसे आपने सोचा? It was a character when we wrote the film, and हम बहुत कि किसको कास्ट करें, you know, how can we make this something different, because हम पहले से ये सोचे थे कि यार Adi is part of the film, you know, इसको for him we are going all the way out to do action, and you know, अब इसके सामने who will be that girl, you know, who will play this character. And we went through a lot of stuff, and I must say, and we finally decided when we saw Sanjana, and they were like, yaar, ye to, we saw her film, and we were like, yaar, Kapil, are you sure that this is the girl? Like, there is something about her that we should definitely go with her. And then it was decided together, yeah, let's do this. Yeah. Hi, Adi, this is Pooja here from Bollywood now. Hi. As you mentioned कि आप बचपन से action films देखते आ रहे हो. So, आपके लिए inspiration कौन है और आपका personal favorite Bollywood में action hero कौन है? Oh, interesting. Growing up, actually, for me, it was mainly Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jackie Chan, and Van Damme. I have seen all the whole filmographies, even their very, very bad films that no one should see. And over here, I would say maybe Sanjay Dutt. Sanjay Dutt, he has such a aura and a personality, and I think he was one of the first that built a physique in our industry, if I'm not wrong, back in the day. So he was always an inspiration growing up, looking at the way that the shape that he was in. So maybe that. हाय आदित्य है सामने आपके सामने. Hi. ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आप में एज ए ओम, उसके लिए किस तरह की तैयारी की आपने, क्योंकि काफ़ी कमाल का लगा वो. थैंक यू. एक्चुअली ये एक 3-4 महीने की प्रोसेस थी. इट वॉज क्वाइट फनी क्योंकि मुझे एक्शन सीखना था. आई हैड नेवर डन आउट एंड आउट एक्शन बिफोर. तो आई डिड 4 months ऑफ मार्शल आर्ट्स, और बॉडी बिल्डिंग भी ज़रूरी था बिकॉज एक्चुअली क्या होता है, मार्शल आर्ट्स करते हुए मसल लॉस होता है. तो आई वुड वेक अप इन द मॉर्निंग. एक्चुअली मैं बोल दूँ दिन का no, not, I won't bore you with that. But it was basically 2 hours of action in the day and 2 hours of weight training at night. And बीच में हम लोग मिलते थे writing sessions के लिए. तो it was like an Om boot camp in life. Hi, Adi here. This is Priyanka from the Telegraph newspaper in Calcutta. Congratulations for the trailer. It's really, really rocking. And you know, we always loved you as the doomed romantic lover, the fun guy, and now this is the big leap. So really looking forward to it. You know, I was really intrigued by the tagline of the film, which says "the battle within." You know, what's been the biggest battle for you within in your career, and how have you overcome it? I don't know if one can look at it like a battle. It is a tricky. It's a funny job we have. It's unpredictable, and I think the main thing is to be able to make peace with ups and downs and the unpredictability. And I think as in early on in your career, you're not so well equipped to handle it. But as the years go on, you realize that everything is transient, and you just have to be able to stay on the level. You know, if things don't go well or they go really well, you know that you still have to prove yourself the next Friday and the next Friday and the next Friday. So it's just about keeping your sense of self-confidence intact, no matter what happens around you, is, I guess, the biggest, most important thing as an actor. Sharik sir, do you want the film to be released at a proper time on 1st of July, or wait for other factors to clear down, like pandemic? Did the pandemic affect your film in any way? No, I think we are gearing. I mean, we are releasing the trailer today, which means we are very confident for a 1st July release. I think we have films since the last wave have come, and there are enough and more success stories which are there. I think there's this latent demand for great content, and people want to go out. And I think we're providing a film which kind of satiates that. So we are very confident of the product, and so yes, of course, we are looking at a theatrical release on 1st, and fingers crossed that the cases remain flat or whatever. I mean, but yeah, I mean, there's no concern otherwise.
How many screens will you be releasing the film? So I think those details will come as we emerge, but it will be a wide release. You know, it will be a large. I think that closer to the time we will be able to tell you exact numbers. Sir, will you want to change your image from a romantic hero to action hero? I guess the idea is that with this film, but I don't want to get stuck with trying to just do one thing. I think it's important for an actor to keep pushing yourself and trying to do different things, so that you don't get too comfortable in any one genre. So while this is something that I feel like is the start of many, I don't want to do only action films. I'd like to do a variety, if possible. रफ़ी मोहम्मद शेख दबंग दुनिया इंदौर से। जहाँ तक ट्रेलर देखा हमको इतना समझ में आया कि एक पिता के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ये क्या है फिल्म में कुछ? कपिल थोड़ा बता दो। वो तो आपको आके देखना पड़ेगा सर। नहीं वो तो समझ में आ रहा है थोड़ा, लेकिन हाँ नहीं सर, अगर वही जितना समझ में आया वही पॉइंट है अभी के लिए। उसके बाद 1 जुलाई को सर। 1 जुलाई। Hello, this is Siraj Sayed from filmfestivals.com here. 2 questions, one to Sanjana and then to Ahmed Bhai. Sanjana, how did you prepare to get into this role? Did you go through action workshops? Did you go through acting training, diction, etc.? And who have been your own ideals while you grew up and reached this stage from rock star till here? Thank you for your question, sir. To play Kavya, I did have to go through a ton of training because she's a girl who can totally take care of herself and she doesn't need any man to kind of fight for her, and she can fight for others. But being a dancer since I was a little girl, I think really set the base for me to kind of be able to pick up choreographies, because while I used to train, I used to feel like an action choreography and a dance choreography is similar. You know, it's about timing, it's about hand-eye coordination. What I did have to learn was, of course, hand-to-hand combat and some amount of weapon use. Because Ahmed sir and Kapil were very sure that Kavya is going to fight in this film. And she's gonna, do what all the boys out there are doing. So I had a blast actually training, and my dad's been a black belt, a karate black belt. So when I was a little girl and I used to come back from school, he used to be kind of practicing on our chat and make me throw some punches and kicks. And thankfully those came in use a little bit. So also a little bit about the acting side. Right. So the acting side, sir, I stumbled into acting with Rockstar when Imtiaz found me in my school while I was doing a dance performance. But being a Delhi girl, I've spent my life in theatre in Delhi, on stage. In Delhi University, we have a very vibrant theatre culture. And I've been working since I was 13 years old, both on stage and in film. So the acting part, I am relatively more confident about, and I've spent a lifetime honing it. So that for me in this film was the easier part. I had to focus more on the action because that was new to me. But obviously there's an endless growth that lies ahead of me. But for the acting bit, not as much. Who are your idols and who are your idols? My idols are many. I'm a nerd, so I've read Michelle Obama's book Becoming, it's like my bedtime story. I don't know how many times I've read it. And I don't think that as actors, your idols necessarily need to be other actors. But growing up, Vidya Balan and even Taapsee, they've kind of paved the way for us women in cinema and done things that really make it easier for us as younger female actors, The kind of paths that I'm doing today, I don't know if I could have done 10 years ago. And that's because of the bold steps that they've taken. So I really do look up to them. Thank you. Ahmed साहब, छोटा सा एक सवाल आपसे। जी बेशक। जब निर्माता, प्रोड्यूसर, खुद ही एक्शन डिज़ाइनर भी हो, तो किस तरह से वो जिम्मेदारी निपटी है? क्योंकि आपके एक्शन डायरेक्टर तो परवेज़ शेख साहब हैं,
तो परवेज शेख के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं, और आप एज एन एक्शन डिज़ाइनर और प्रोड्यूसर तीनों जगह किस तरह से ये जुड़ा, किस तरह से ये बना, क्योंकि एक्शन ही मेरे ख्याल में फिल्म का मेजर हाईलाइट रहेगा और होना भी चाहिए जिस तरह का हमने देखा। देखिए, मैं कोरियोग्राफर रहा हूँ पेशे से, सो 25 साल कोरियोग्राफी कर करके हमें वो तजुर्बा आ जाता है कि हाउ डज अ डांस लुक, जब एक एक्टर डांस करता तो फुल फिगर में खूबसूरत कैसा दिखे। तो उससे मैंने आई जस्ट स्वॉप्ड इट टू एक्शन। तो जब मैंने अपनी फिल्में डायरेक्ट की हैं तो उसमें कंसीव करता था मैं पूरा एक्शन, एंड आई शुड डेफिनेटली गिव इट टू द एक्शन डायरेक्टर। एंड परवेज शेख आज टॉप एक्शन डायरेक्टर है हमारे बॉलीवुड के, तो नोबडी बेटर देन हिम। एंड जिस तरह परवेज शेख ने पूरी एक्शन को एक दर्जे पे ले गए हैं, दैट इज़ जो विजन था मेरे माइंड में, उनको मैंने जो कहा, ही डिड इट। बट दूसरा हाथ मैं दूंगा, कपिल हैज़ बीन ही इज़ बिलोंग इन टू एन एक्शन फैमिली। सो उन्होंने बचपन से एक्शन देखते हुए बड़े हुए। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने बचपन से, मेरे डैड डॉक्टर है तो उनको डॉक्टरी करते हुए देखा है, किसी के डैड बिजनेसमैन है तो बिजनेस करते हुए देखा है, इनके डैड एक्शन डायरेक्टर हैं तो इन्होंने सिर्फ तोड़ फोड़ देखा है। तो मुझे इतना पता था कि मैंने जो डिज़ाइन किया है वो परवेज शेख को तो बोल दिया हूँ, वो कर रहे हैं, बाकी हमारे साथ वर्मा साहब भी हैं। सो वरना है तो फिर डरना क्या है। सो इन्होंने भी बोला सर मैं भी थोड़ा फोड़ दूँ, मैं बोला फोड़ो। एंड चूँकि शारिक साहब थे टू सपोर्ट अस, तो दैट वेंट वेल। बट इस फिल्म में एक्शन अपनी जगह ज़रूर है, बट मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा मेरे राइटर्स को, वो है राज सलूजा और निकेत पांडे। उन्होंने इतनी खूबसूरती से इस फिल्म को लिखा है एक लेखक की तरह कि जब आप देखेंगे, जैसे आपका सवाल था लड़ाई किसके लिए, बाप के लिए है, देश के लिए है। हम कहते हैं देश मेरी माँ है, ओके। तो इस फिल्म में ओम की लड़ाई 3 चीज़ से है, अपनी याददाश्त से, अपने बाप की जो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसे मिटाना है, और देश की एक बहुत बड़ी गौरवशाली चीज़ है उसे वापस लाना है। तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज। सो व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सोल्जर जो टॉप टू बॉटम इज 100% और उसकी मेमोरी इज 0%, एंड देयर इज अ ह्यूज इमोशन ऑन हिम, तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सर्कल है जो अपनी माँ को वादा करता है कि मैं ये सब निभाऊंगा एंड मैं खरा उतरूंगा अपने प्रॉमिस पे। तो ऐसी औलाद हर माँ को मिले, हर देश को मिले। दैट्स द फिल्म ऑल अबाउट। लेकिन अहमद सर, सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि एक सैनिक होने के लिए सैनिक बनना भी पड़ता है, जो आदित्य ने बनकर दिखाया है, पैरा कमांडो। तो आदित्य से जानना चाहेंगे पैरा कमांडो की लाइफ उनके लिए कितनी हेक्टिक रही। गोपाल फ्रॉम दैनिक नवज्योति न्यूज़पेपर, जयपुर। Yeah, I think while I did have a boot camp for OM, it was not that tough. As tough as the lives of a para commando. I think YouTube पे देखने मिलता है ऐसे videos बनाते हैं आजकल where they show you the lives of these para commandos, and that is extremely tough because they are actually risking their lives. They're risking their lives for honor, for principles, for the country, and they have a lot to sacrifice, and their families as well. So I can't even claim to understand what that would feel like. I'm just been an actor trying to portray what they go through. So in all honesty, I don't know, but all respect to what they do, Hi, Sanjana, Rashita here from Peeping Moon. So my question to you is that earlier, there was a certain notion that women can't do action in films, and we didn't see that part for a very long time. We saw heroes doing action and women coming in as the leading ladies, but just doing the acting bit. Now, of course, we see you going all out with the action. So do you see this notion changing with new age actors like yourself coming into the film industry and sort of breaking those stereotypes? I hope so. But this one doesn't have anything to do with me. It only has everything to do with our writers and Caps and Ahmed sir, because it's all about the vision, right? It's all about believing that they believe that, and they believe that she can contribute equally to Om's journey. And I don't know why nobody believed that 2 years before us or 5 years before us, but I hope that for years hereafter they do. Because all I can tell you is that as a girl, it's mad fun. It's mad fun, and it's liberating to a whole other level.
Okay, got it. But my point is, you said they believed in you, but I'm sure you believed in yourself as well, and that's why you opted to do this role. So, She came with the flying kick in the office. ऐसा उड़ते हुए आई ऐसा, इतना बिलीव था. And I think you've been a topper, na? In school, you've topped everything. So I think everything she puts her mind to, I think she aces. So I think मुझे you would see that. शारिक साहब बोलते थे यार इतना करा रहे हो लड़की टूट ना जाए. मैं बोलता था हाँ आई डोंट नो कर रही है, कभी यहाँ क्रैम्प आ गया, कभी यहाँ मोच आ गई, कभी बैक पुल हो गया. एंड शी वाज एक्चुअली ये, बट जब सेट पे आके शी डिड द एक्शन एंड आई वाज लाइक संजना. हमको लगता था शी इज अ पेटी लिटिल प्रिटी, आई हैव सीन अ स्मॉल. सडनली शी गॉट इनटू इट. तो इट्स अंदर था बहुत. ब्लैक बेल्ट की बेटी है तो. okay, perfect. All the very best to the entire team. Thank you. एंड आई वुड जस्ट लाइक टू मेंशन वन थिंग कि आप इसमें देखो जैकी श्रॉफ सर हैं who's playing the father, you have Ashutosh Rana साहब, then you have Mr. प्रकाश राज. तो गुणी एक्टर है, घाग एक्टर है, तो वो सब ने अपना रोल इतना अच्छा निभाया है कि दे हैव एक्चुअली कंप्लीटेड द फिल्म. जैसे एक्शन की बात हुई थी, तो एक्टिंग वाइज ऑल्सो वी हैव गॉट अ बिग क्लाउड ऑफ ग्रेट एक्टर्स एंड दे ऑल हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, इवन प्राची शाह टू एवरीवन. सो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सिनेमा. सर हेलो हेलो जी पूछे. हाँ सर. सर शारिक फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन. सर आपसे पूछना चाहेंगे कि ओम द बैटल विद इन, तो इन रियल लाइफ आप लोग के अंदर भी क्या क्या बैटल है और आप लोग कैसे लड़ते हैं उससे? किसके लिए सवाल? For me, सुबह जल्दी उठना मेरा सबसे बड़ा बैटल. Waking up in the morning for a 7 a.m. call time is the biggest battle within for me. Sanjana? Right now, I'm shooting in the mountains, so breathing in less oxygen currently is a great battle, honestly. I'm trying to just breathe. All right, we'll just take 2 last questions, right? Hi, Sanjana Akriti here from Absolute India News. Hi. Sanjana, I want to ask, you are doing action for the first time. What was the most challenging part, and did you sustain any bruises while shooting for this? The most challenging part, I think for me, was explosions. Yeah, I'm really bad with them. If anything explodes in front of me, I just start running away. So she just hid behind Adi. इतनी बड़ी दीवार. Hide behind him, and then there are shots where I've left the frame. So I've been a very expensive actor to my producers because many a helicopter has had to be blasted. But yeah, what else? What did you ask? She did twisted her ankle in My in knee, the fight but that's an old injury. Yeah. while shooting in the house. So yeah, that happened once. वो तो होता ही है. That's bound to happen. Yeah. Well, अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आप पूरी टीम को अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ कि पिक्चर सुपर डुपर इन्फिनिटी हिट होगी. Thank you so much. ये मेरी That's दुआ है. blessings. Thank you so much. Well, मैं भारत के सबसे साफ सुथरे शहर इंदौर से हूँ. मनीषा दुबे, प्रभात किरण से. आदित्य से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी मैं, और उसके बाद आप सब लोगों से भी. आदित्य, ये जो पोस्टर देख रही थी ना मैं, ऐसे वाला ना, जी जी, तो मतलब यहाँ बैठे और वो पोस्टर में बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि ये आप ही हो. तो ये ऐसा वाला जो है ना, ये किसको देख के आता था? कहते ना अंदर एक कोई आग होती है जो कभी ना कभी आपके सामने आ जाती है. ऐसे एज एन एक्टर ना, ये मजाक की बात थी, पर क्या ऐसा अंदर कुछ था जो इस फिल्म के जरिए बाहर निकला है और आपने पर्दे पर? जी, एज एन एक्टर यू हैव टू फाइंड इमोशंस व्हिच आर नॉट देयर इन द रूम. तो कभी कभी मेमोरी यूज होता है, तो आई हैड टू थिंक ऑफ सम ओल्ड थिंग, और उसका नाम मैं नहीं लूंगा. तो ले सकते हो, छापूंगी नहीं. नहीं आज में, बाद में बात करते हैं. वेल, आप सबसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं. क्या ऐसे अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस रहे जबकि लगा कि बहुत क्रूशियल है, बहुत डिफिकल्टी, और कैसे होगा? क्या ऐसा कुछ आया आप सभी लोगों की उसमें ड्यूरिंग जो आपने इसकी शूटिंग करी उसके? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन. हाँ जी, पेंडेमिक आया और हमने जब शुरुआत की थी
हमने एक्चुअली पैंडमिक के बीच में शूटिंग शुरुआत की थी और बहुत स्ट्रेस था बट फॉर्चुनेटली किसको भी द एंटायर क्रू वाज हेल्दी और हमने फिल्म ये बहुत आराम से ख़त्म की एंड वी हैड बस पैंडमिक का स्ट्रेस था बट हाँ इट वाज अ बिग स्ट्रेस बिकॉज हमारे पास क्रू स्ट्रेंथ बहुत कम थी और हर डिपार्टमेंट के सिर्फ 1 या 2 लोग अलाउड थे एंड प्लस मेकिंग अ बिग एक्शन फिल्म लाइक दिस हाँ तो थी बैटल्स थी फिल्म में भी बट हो गया। अहमद साहब जी इधर राइट साइड आपके राइट साइड में हाल ही में आपने 2 फिल्में की जो म्यूजिक बेस्ड थी काफ़ी देहाती डिस्को एंड हीरोपंती 2 बहरहाल इस फिल्म में म्यूजिक को आपने कितना महत्व दिया है? देहाती डिस्को मेरी फिल्म है बिकॉज वो मेरे दोस्त की फिल्म है गणेश आचार्य की फिल्म है मेरी नहीं एंड इस फिल्म में म्यूजिक देखो आदित्य को लेके आप म्यूजिक का स्ट्रेस नहीं ले सकते बिकॉज इनकी हर म्यूजिक चलती है सो आदित्य रॉय कपूर एंड म्यूजिक आर लाइक राइट एंड लेफ्ट हैंड सो इसमें हमने ज़्यादा ध्यान दिया है बिकॉज मेहनत लग रही थी टू डू एक्शन एंड पुट हिम लाइक दिस जैसे मैम ने भी कहा तो ये के लिए बहुत स्ट्रेस था बट लकीली ही इज़ अ बॉय आई कैन से जो हम बोलते हैं ना बेसिक लैंग्वेज में घुसता है उसको घुसाना नहीं पड़ता है ही गेट्स इनटू इट एंड ही इरिटेट्स यू टू अ लेवल ऑफ यू कैन पकाओ यू और आपका ऑमलेट बन सकता है बट वो इतनी अच्छी बात है यू रियलाइज लेटर कि ही इज नॉट पकाइंग ही इज पकाइंग हिमसेल्फ मेंटली तो वो खुद इतनी बेहतरीन तरीके से इसमें आ जाते हैं सो अभी जैसे मैंने कहा कि हम लोग का गाना शुरू हो जाएगा 2 गाने हैं बहुत खूबसूरत फिल्म में आज एक और गाना शूट कर रहे हैं विच इज़ अ वेरी आदित्य रॉय कपूर स्टाइल ऑफ अ सॉन्ग मज़ा आएगा यू विल लव द म्यूजिक ऑफ द फिल्म ऑल्सो सो दैट्स नॉट अ थिंग टू वरी तो एंड म्यूज़िक की बात रही तो एवरी फिल्म इज़ म्यूजिकल एक्शन हो तो म्यूज़िक है फैमिली है तो म्यूज़िक है इंडियंस आर म्यूजिकल तो म्यूज़िक तो अच्छा ही है फिल्म का Cool है, thank you so much. That's all we have for you, ladies and gentlemen. I think सब कुछ cover कर लिया हम लोग ने. We glad, right? Thank you guys. Thank you so much. Thank you all you wonderful people. Thank you so much. है ना? Thank you so much.